Hello everyone, welcome to another case study and it is from class 12th और आज की जो केस स्टडी है बच्चों वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्लास 11th के अंदर भी केस स्टडीज कर चुके होंगे एंड यू मस्ट बी नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ केस स्टडीज। Well, to begin, before beginning the case studies, I just want to share some information regarding myself. My name is Lucky Pushrat and I'm the founder of an organization called Mabrix India Solution. I have been teaching from past around 2 decades. I've taught in prestigious University of Delhi and other top management colleges of Delhi and NCR. And my qualifications are I am an English honors, Masters in English Literature, Masters in Business Administration, and I am a certified human resource journalist. तो बच्चों आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी पर बात करेंगे विच इज फ्रॉम यूनिट 1 and this is the first case study and its title is the bull in a china shop. ये एक idiom भी है तो इस पर हम बात करेंगे आज की केस स्टडी में। और जो अभी मेरा पर्सपेक्टिव है इन केस स्टडीज का वो ये है कि बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल कंटेंट ऑफ 12th standard, I just want to take up majority of the case studies so as to give you a glimpse of what this specific subject is all about and how you have to approach it. ये बच्चों आज एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है बट आने वाले दिनों में आप देखिएगा दैट इट इज गोइंग टू बी either a main subject or a subject of great importance, because whenever I teach this subject, mentally I stop. It is something very very exclusive and important. तो हम आज का कंटेंट लेते हैं, कंटेंट स्टार्ट करते हैं एंड हियर इट कम्स। यूनिट 1 एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। और आज हम पहले एक केस स्टडी लेंगे एंड दिस इज द केस स्टडी ऑफ सुशील झुंझुनवाला और केस स्टडी है बुल इन अ चाइना शॉप। तो बच्चों आज की केस स्टडी में हम ये 7 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। दीज पॉइंट्स आर ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस एंड आई बिलीव कि आप इन पॉइंट्स को मेरे साथ एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे। इन द एंड आई हैव टेकन the important questions from the case study and I believe it is very valuable, very very valuable. तो बच्चों पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आज वो है द इडियम बुल इन अ चाइना शॉप मींस। इस इडियम का मतलब क्या है, why this specific idiom has been considered viable for this case study। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि अगर ये केस स्टडी 12th स्टैंडर्ड की पहली केस स्टडी है तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। अगर 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये केस स्टडी पढ़ाई जा रही है और इट इज नंबर 1 केस स्टडी ऑफ यूनिट 1, you can check it out that how important this case study is. Or n number of case studies are there in class 12 as well as it is there in class 11th as well. So case study 1, second point is bull in a china shop. Third is why is bone ash used in bone china crockery. Third is the porcelain and glass tableware market in India. Fifth point is Radha Glass at Madhopur. Sixth point is collaboration with Dusan of South Korea. And seventh one is which is second plant in Sitarganj in Haldwani, Uttarakhand. So इन हम सारे पॉइंट्स को आज डिस्कस करेंगे and I believe it is going to work very well for you. Let's take up few concepts to start with. So बच्चों आप जानते ही होंगे, आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं हु इज एन एंटरप्रेन्योर, आप जानते होंगे इस चीज को। देखिए अगर हम जो डेफिनेशन आपके सामने गिवन है इसको लें और इसको अंडरस्टैंड करें तो ही प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल एंड इन ऑर्डर टू सर्व द सोसाइटी एंड कस्टमर्स एट लार्ज। तो पहला जो पॉइंट है बच्चों वो ये है द पर्सन हु टेक्स द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग a new business venture is called an entrepreneur.
So what exactly entrepreneur does, that they understand, or they see a problem in society with people. They try to understand it, they try to work on it, and slowly and gradually they want to solve it forever. तो solve कैसे करेंगे? By making certain new products, and on the basis of those new products they can solve the customers queries, the customer problems. And then they keep adding on, innovating those products, adding better products afterwards. But the major requirement for these entrepreneurs is that they observe a problem of people and then try to solve it with the help of a venture. So they play a very significant role. And the next point is, what is entrepreneurship? तो बच्चों, entrepreneurship is a form of an action. जो भी entrepreneur को अपने, give me a second, जो भी entrepreneur को अपने काम को establish करने के लिए actions लेने पड़ते हैं, उसे कहा जाता है entrepreneurship. जो भी क्रिया, जो भी काम वो करते हैं, meeting people, forming network, making business plan, um, asking for loans, asking for debts, asking for funds. So whatsoever process is required in order to take up, their, business, uh, for taking off of their business, that is what entrepreneurship. Let's take up these definitions. It is the process of designing, launching, and running a new business. Further developing and managing the business along with risk to make profit. So बच्चों, ultimately सारे actions करने के बाद they have to reap profits. तो entrepreneur basically is observation of a problem, और जब उस प्रॉब्लम पर काम किया जाता है और उस प्रॉब्लम को सोसाइटी के लिए सॉल्व करके इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उनको वापस किया जाता है, इट इज व्हाट entrepreneurship is. It's a process of designing, launching and running a new business. उसे डिजाइन करना, उसे लॉन्च करना, और फिर उसको कॉन्टिन्यूसली चलाते रहना, irrespective of any challenges, problems that they face, and then they churn out profits. So ये बहुत important दो points हैं. The first one is who is an entrepreneur, and second one is what is entrepreneurship. So these are the few concepts I wish to start with. Let's take up the first point. The idiom bull in a china shop means, इस idiom का मतलब क्या है? तो बच्चों, a person who breaks things or who often makes mistakes or cause damage in situations that require careful thinking or behavior. तो बच्चों, बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसी एक जगह पर ब्रेक इन कर जाए जहां पर बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत होती है, एंड एग्जैक्टली ही इज नॉट कंसिडर्ड फिट फॉर दैट प्लेस, तो उसे कहा जाएगा बुल इन अ चाइना शॉप. चाइना शॉप में क्या होता है? एवरीथिंग इज वेरी फ्रेजाइल. तो अगर वहां पर एक बुल उस शॉप में चला जाएगा तो ऑब्वियसली व्हाट विल डू, दैट यू कैन सी इन द पिक्चर. So a person who breaks things or who often makes mistakes or cause damage in situation that require careful thinking or behavior. तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई व्यक्ति आ जाता है जहां पर बहुत केयरफुल थिंकिंग और एक अच्छे बिहेवियर की जरूरत होती है, but in spite of that he is not able to give it or do it, तो वो justify करता है idiom bull in a china shop. Second point, this idiom means behaving in a reckless manner, rushing headlong into a situation without a forethought. तो बच्चों, यही इस केस स्टडी के जो प्रोटैगनिस्ट हैं, जो केस स्टडी के हीरो हैं, सुशील झुनझुनवाला, उन्होंने किया. उन्होंने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसके बारे में दूर दूर तक किसी को कोई भी ख्याल नहीं था. कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कोई ऐसा बिजनेस पोर्सलेन से रिलेटेड इंडिया में स्टार्ट करेगा. और उसके बाद उन्होंने उसे स्टैब्लिश भी की. नॉट ओनली इन आवर कंट्री, ही हैज स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग दीज प्रोडक्ट्स एज वेल फॉर अदर कंट्रीज. सो वो एक बुल इन अ चाइना शॉप की में जैसे जो ईडीएम है जस्टिफाई कर रहा है,
वो एक चाइना शॉप में बुल की तरह चले गए, एंड देन ही स्टार्टेड recklessly working towards that business, and now it's one of the most established countries in the country. तो बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, और हम बहुत सारी बातें इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। केस स्टडी 1, बुल इन अ चाइना शॉप। तो अब बच्चों थोड़ा सा केस स्टडी का पढ़ लेते हैं। La Opala is India's only opal glassware maker and ready to take on global competition. तो बच्चों इंडिया में अगर आप ओपल ग्लासवेयर की कंपनीज के बारे में बात करेंगे, जिस टाइम पे इन्होंने स्टार्ट किया था, तो इट वाज द ओनली कंपनी which had started making crockery, which is named as La Opala. ये पोर्सलेन की क्रॉकरी होती थी। इन द 19th सेंचुरी, ये हम 1900 से पहले की बात कर रहे हैं। इन द 19th सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन एज वेल। इन द 19th century, it was common to import crockery from China in return for opium exports from Calcutta. तो बच्चों 19th सेंचुरी के अंदर बहुत कॉमन था क्रॉकरी को इंपोर्ट करना चाइना से, और उसकी एवज में, उसके बिहाफ पे ओपियम इंडिया से भेजा जाता था। तो चाइना से क्रॉकरी आती थी, एंड ओपियम was being sent from India. So in the 19th century, it was common to import crockery from China in return for opium exports from Kolkata. Now it is Kolkata, earlier it was Calcutta. Third point. However, bone China crockery never really caught on because it used cow bone ash. तो बच्चों जो बोन चाइना की क्रॉकरी थी, वो देखने में बहुत सुंदर थी, यूज करने में भी अच्छी थी, पर उसने इतनी ज्यादा यू नो वो लाइमलाइट में नहीं आ सकी, इतनी ज्यादा एक्सेप्ट नहीं की जा सकी लोगों के द्वारा, बिकॉज उसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि वो काउ बोन ऐश उसके अंदर यूज करते थे टू मेक दैट क्रॉकरी विद द हेल्प ऑफ पोर्सलेन। तो उसके अंदर काउ बोन ऐश मिक्स करते थे, जिससे वो ब्रिटल हो जाती थी, लिटरली इट बिकम्स अनब्रेकेबल, और उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती थी, बट इंडियंस वर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट। नेक्स्ट, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उन पे स्टार बना दूंगा, देन यू कैन रिकॉल एंड रिमेंबर देम एट वेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों। Fourth point, even today, food is served on glass plates at traditional weddings for this reason. और ये बहुत बड़ा रीजन साबित हुआ पोर्सलिन क्रॉकरी का इंडिया में फेल होने, बिकॉज दे यूज्ड काउ बोन ऐश इनटू इट। और आज भी बच्चों, जो भी हमारी आपने वेडिंग्स में भी देखा होगा, तो जो भी खाना सर्व किया जाता है, तो जो वेडिंग में प्लेट्स होती है जहां पर आप जिसमें खाना खाते हैं, दे आर मेड अप ऑफ ग्लास एंड नॉट ऑफ पोर्सलिन, रीजन बीइंग कार्बन ऐश, इसको अवॉइड किया जाता है बेसिकली। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। व्हाई इज बोन ऐश यूज्ड इन चाइना क्रॉकरी? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में भी कई बार आ जाता है, तो आपने इसको जरा समझ लेना है, so that you people can score good marks with this question if it comes in the paper. So the first point is, in the formula of bone china crockery, 50% of bone ash is used. तो अगर आप बोन चाइना क्रॉकरी को देखें, तो उसके अंदर 50% बोन ऐश इस्तेमाल किया जाता है। इट इज मेजरली द कैटल बोन्स एंड अदर बर्न्ड एनिमल बोन्स। तो मेजरली इसमें कैटल बोन्स और एनिमल्स की बोन्स को उसका पाउडर बना के यूज किया जाता है, और 50% ऑफ बोन ऐश इज यूज्ड। The purpose of using bones is that it has lower iron content. इसमें bones के जो पाउडर है, इसमें आयरन कंटेंट कम होता है। This bone ash is mixed directly into the clay. उसे clay के साथ मिक्स किया जाता है to make crockery durable and chip resistant और resistance. अब बच्चों क्या होता है कि आप कभी भी पोर्सलिन की क्रॉकरी को देखेंगे, तो उसमें ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना, अगर आप उसमें बोन ऐश यूज नहीं करेंगे या प्योर उसे कांच से बनाएंगे, तो उसमें ना एक टाइम के बाद क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो जो चाइनीज क्रॉकरी होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, वो चिप रेजिस्टेंस रहती है, उसमें चिप्स नहीं पड़ते,
प्लेट्स के कोने नहीं टूटते, इट वोंट बिकम दैट ब्रिटल, और उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए। तो आपने मुख्यतः ये समझना है कि 50% जब बोन ऐश हम डाल देते हैं उसके अंदर, क्ले के अंदर, तो ये क्रॉकरी को ज्यादा ड्यूरेबल बना। एंड rest of the points are clear with you. If you have to write down a detailed answer, then you can obviously use these points as well. So with this, let's move on to the next point. The porcelain and glass tableware market in India. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी बच्चों। The porcelain and glass tableware market in India has always been strong. और बच्चों जो आपको इस चीज का पता ही है that we people generally love good quality crockery. तो इसका बहुत अच्छा एक टेस्ट रहा है इंडियंस का इसके लिए, पोर्सलिन क्रॉकरी के लिए। However, after independence and under foreign exchange restrictions, crockery imports tapered off and the market was filled with small manufacturers with products of suspect quality. Now, this is, the turning point. अब देखिए, आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ चुके हैं पहले भी, और आज भी आप पढ़ रहे हैं। देखिए, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, इट इज अ टर्निंग पॉइंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज अ टर्निंग पॉइंट। एंड टर्निंग पॉइंट, क्योंकि बच्चों इंडिपेंडेंस के बाद फॉरेन एक्सचेंज पे रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी, और जो ये पोर्सलिन क्रॉकरी थी, इसका जो बिजनेस था, इम्पोर्ट्स था, वो रिड्यूस हो गया था, कम हो गया था। और इंडियंस की रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें ग्लास टेबलवेयर चाहिए थी। तो क्या हुआ उस दौरान, देखिए, एंड द मार्केट वाज फिल्ड विद स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स विद प्रोडक्ट्स ऑफ सस्पेक्टेड क्वालिटी। तो जो मार्केट थी उस टाइम पर फिल हो गई उन लोगों के द्वारा जो एक इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे थे। तो जब कुछ और ऑप्शन अवेलेबल नहीं था तो लोगों को उसका इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसको सुशील झुनझुनवाला वाज ऑब्जर्विंग, एंड ही मेड द राइट मूव एट द राइट टाइम। सो बच्चों, ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग, कीपिंग अ राइट विजन, यू नो keep assessing your strengths and weaknesses is one of the qualities or traits of an entrepreneur. मैं इसको जस्टिफाई करूंगा आने वाले पॉइंट्स के अंदर। लेट्स मूव ऑन। अब जो उनका पहला यूनिट उन्होंने लगाया सुशील झुनझुनवाला ने, इट इज राधा ग्लास एट माधोपुर। लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स इट। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राधा ग्लास एट माधोपुर। अ स्मॉल ग्लास किल्न, किल्न का मतलब होता है बच्चों फर्नेस, ओवन। ओवन होता है जहां पर ग्लास को पिघाला जाता है और फिर उसको शेप्स दी जाती है। A small glass kiln, Radha Glass at Madhopur in Bihar, has been making tea shop glasses, jars that are found in the neighborhood grocery shop and hurricane lampshades for decades. तो बच्चों, जब ये इंफॉर्मेशन राधा ग्लास के पास पहुंची तो उस टाइम पर वो एस्टैब्लिश थे, मतलब टू अ सर्टेन एक्सटेंट, जहां पर वो चाय के ग्लासेस जो कि आपकी टी शॉप्स पे अवेलेबल होते हैं। आपने देखा थोड़े से इंफीरियर क्वालिटी के ग्लासेस होते हैं वो। और आपको जार्स जो नेबरहुड ग्रोसरी में आपको मिल जाएंगे, ऐसे जार्स जिसके अंदर आपने देखा होगा उस टाइम पे। आज तो ऐसा, क्योंकि आज तो हर चीज पैकेट्स में आती है, उस टाइम पे जार्स में यू नो नमकीन, बिस्किट्स रखे जाते थे। मतलब इट इज बीइंग कवर्ड फ्रॉम टॉप, एंड देन यू कैन चूज 5-6 बिस्किट्स एंड यू कैन पे फॉर दैट। तो पैकेट्स में नहीं आते थे, तो इसलिए वो जार्स बनाते। और हरिकेन लैम्पशेड्स बनाते थे फ्रॉम डिकेड्स, कई वर्षों से बना रहे। द एल्डेस्ट सन of the family, Sushil Jhunjhunwala, inherited his father's business in mid 1980s. तो जो सबसे बड़े बेटे थे फैमिली के, सुशील झुनझुनवाला, जिनकी फोटोग्राफ आपने पहले देखी है, उन्होंने फादर के बिजनेस को इनहेरिट किया, टेक ओवर किया इन द ईयर 1980। बच्चों, 11 साल पहले की बात है जब हमारी इकोनॉमी लिबरल हुई। ओके, द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम ऑफ 1991, जिसके बाद हमारी इकोनॉमी लिबरल हुई थी, ये उससे पहले की बात है। और आप उससे पहले की सोच देखिएगा
how entrepreneurs are visionary. They think, far and beyond. Third point, Jhunjhunwala realized that nothing big could happen. Now, this is something very, very important and crucial. Nothing big could happen if he stuck to traditional glass products and was persuaded to look around. तो बच्चों, आप देखिए, अगर आपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो बिना एक्शन के, बिना मूव किए, बिना नेटवर्क को फॉर्म किए, यू कैन नॉट डू बिग। तो उनके भी यही सोच थी। उन्होंने कहा अगर मैं यही टी ग्लासेस, यही जार्स और यही हरिकेन लैंप्स बनाता रहा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। नेक्स्ट, he got an idea when in the late 1980s during a trip to South Korea, he came across an opaque white glass called, it is again a turning point, it's a TP. They are very strong, observers. It's a turning point again. He got an idea when in the late 1980s, आज से 43 years पहले, during a trip to South Korea, he came across an opaque का मतलब है जो translucent है, जिसमें से आप आर पार देख सकते हैं, not that clearly but फिर भी उसमें से नजर आता है, white glass called. Impressed by its look, he decided to manufacture it with the use of imported machinery, and La Opala was born in the year 1988. तो 8 साल के बाद इस कंपनी को उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने कहा मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कराऊंगा और मशीनें बाहर से मंगाऊंगा। एंड दैट्स द इंसेप्शन ऑफ ला ओपाला। इंसेप्शन का मतलब होता है पहला कदम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंसेप्शन का मतलब है बच्चों द फर्स्ट स्टेप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप जब भी मुझसे पढ़ेंगे ना बच्चों, तो आपको मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट रेलेवेंट, नथिंग बट द रेलेवेंट पॉइंट्स पर ही क्लासेस दूंगा। आर यू गेटिंग इट? Rest of the things you can do it yourself, but I'll try to take up all the relevant points from the case studies. Okay. Jhunjhunwala's timing was almost perfect because liberalization and the Indian middle class affluence began to bloom after 1991. तो उनका टाइमिंग परफेक्ट। उन्होंने कहा 88 में बनाऊंगा, धीरे धीरे करके मेरा नाम हो जाएगा और इंडियन मिडिल क्लास इज बिकमिंग एफ्लुएंट नाउ, दे आर अर्निंग मनी, दे हैव सीन अ न्यू इनकमिंग ऑफ मनी, तो मेरा काम चलने के लिए, तो हिज मूव वाज परफेक्ट एट दैट। Seventh point, every middle class home was gifted one or two La Opala sets at a wedding. और हर वेडिंग के ऊपर ला ओपाला सेट्स को गिफ्ट करने का एक रिवाज बन गया, बिकॉज इट वाज एन एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल गिफ्ट दैट पीपल विश टू शेयर विद ईच अदर। ये नया भी आया था मार्केट में, तो लोगों ने कहा पुरानी क्रॉकरी को एक तरफ और अब ला ओपाला को अब यूज। तो जब भी शादियों में जाते थे लोग, तो डिनर सेट और क्रॉकरी and other utensils of lao pala, they started gifting it to each other. Next is the idea was to bring out an elegant product, Indianize it and make it readily available at an affordable price. So बच्चे बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका प्रोडक्ट है ना, इट हैज टू बी एलिगेंट, इट हैज टू बी ब्यूटीफुल, इंडियन टच दे दिया, जो उसका डिजाइन था वो इंडियनाइज कर दिया, एंड मेक इट रेडली अवेलेबल, और फटाफट उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, अफोर्डेबल प्राइस, एंड प्राइस वाज यूजर फ्रेंडली। तो आप देख लीजिए हाउ entrepreneurs they think and how they think different from an average human. Now this is what the question here is. So let's move on to the next slide. अब बच्चों, जब हम ग्रोथ करते हैं ना, तो हमें नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके, नए कॉन्सेप्ट्स, नई पॉलिसीज, नए प्रिंसिपल्स पे काम करना पड़ता है। उसके लिए सुशील झुंझुनवाला ने सोचा व्हाई नॉट टू गो टू साउथ कोरिया एंड अगेन डू समथिंग बिगर देन व्हाट आई एम डूइंग राइट। तो एक 6 पॉइंट है जहां पे उनका कोलैबोरेशन हुआ विद दुसान कंपनी इन साउथ कोरिया।
इस पे 2 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स यहाँ पे, 3 पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड पे है। तो अकॉर्डिंग टू झुनझुनवाला द अट्रैक्टिव ओवन प्रूफ, तो ये जो आपकी ला ओपाला क्रॉकरी है बच्चों, अगर आप इसमें खाना रख के माइक्रोवेव ओवन में गर्म भी करेंगे ना, तो ये मतलब इट कैन बियर दैट हीट, तो ये ओवन फ्रेंडली है। तो according to Jhunjhunwala, the attractive oven-proof designs were a welcome change from a heavy porcelain and China tableware that dominated the Indian market at that time. तो लोगों ने इसे बहुत पसंद किया, ये ओवन फ्रेंडली थे, ये लाइटर थे पहले की क्रॉकरी से। तो if the things are better, if the things are useful and more durable, so people are going to accept. Next point, second point, in 1996, Jhunjhunwala started a handmade lead crystal glassware unit in collaboration with Doosan of South Korea. एक साउथ कोरिया की कंपनी है बच्चों दुसान, उनके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया और 1996 के अंदर इन्होंने हैंडमेड लेड क्रिस्टल ग्लासवेयर यूनिट स्टार्ट किया। तो जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन होती थी वो हैंडमेड थी। और ग्लासवेयर यूनिट इन कोलैबोरेशन विद दुसान ऑफ साउथ कोरिया। थर्ड पॉइंट, अ साउथ कोरियन मल्टी, जो मैं दुसान के बारे में आपको बता रहा हूं, अ साउथ कोरियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी फाउंडेड इन 1896 रैंक at 471st place in the Fortune Global 500 companies. It was ranked amongst fourth amongst world's best 40 companies in 2009. So it's a big organization जिनके साथ टाई अप हुआ। ये बच्चों स्टार्ट की गई थी इन 1896 एंड इट वाज 471st कंपनी, मतलब फॉर्च्यून ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से इनकी जो पोजीशन थी वो थी 471 एंड इन 2009 इट वाज रैंक अमंग फोर्थ कंपनी। जब टॉप 40 कंपनीज की बात हुई 2009 के अंदर, तो इनको फोर्थ पोजीशन मिला। अब दुसान के बारे में इतना ही, पर यस, सुशील झुंझुनवाला और लाओपाला के बारे में आपको ये बताऊंगा। सी हिज विजन, सी हिज रीच एंड सी हिज persuasive qualities that going to South Korea, meeting people over there, doing a collaboration and started building, started making products out here in the country. So this is something very, very important, crucial. It will show you, the traits of Sushil Jhunjhunwala. Let's move on to the point fourth. It was well-placed investment because labor rates in the main crystal manufacturing countries were high, and because the Indian middle classes were developing a penchant for good glasses, तो लाइकिंग थी इंडिया में। और यहाँ पे जो लेबर का रेट था वो इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज इट वाज लेस। Solitaire handmade lead crystal glassware making has now matured with 1,100 tons per annum और पर ईयर एट एन एनुअल सेल ऑफ 18 करोड़ रुपीस। तो जब इन्होंने ये काम स्टार्ट किया तो धीरे धीरे काम ग्रो होने लगा और एक साल के अंदर इन्होंने 1100 टन ला उपाला क्रॉकरी बनाई और जिसकी सेल्स थी 18 करोड़ रुपीस की। तो बच्चों इफ यू टॉक अबाउट 90s एंड 95, तो उस टाइम पर ये सेल बहुत बड़ी सेल, बहुत बड़ी सेल। 18 करोड़ की सेल आज भी बहुत बड़ी है और तब भी बहुत बड़ी होती है। 6 point, there are about 150 skilled workers who made car crystals at माधोपुर plant। और सिर्फ जो ये काम किया गया था ये 150 स्किल्ड वर्कर्स के साथ किया गया। आप देखिए, अचीविंग अ लैंडमार्क ऑफ 1100 टन पर एनम और 18 करोड़ की सेल ओनली विद 150 स्किल्ड वर्कर्स। दिस इज अगेन वन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ही वर्क्स एज अ लीडर, वो आप में वो क्वालिटी देखता है जो आप खुद में नहीं देख पाते, एंड देन ही मेक्स यू द थिंग्स दैट यू लव टू डू।
तो उन्होंने 150 स्किल्ड वर्कर्स अपने साथ रखे, उनसे काम लिया, उन्हें काम सिखवाया, काम सीखने के बाद 1100 टन पर एनम प्रोडक्शन की, और जो 18 करोड़ की सेल्स लेके आए। अब उनके पास सेकंड प्लांट है। now this is the picture of the family. Here is सुशील झुंझुनवाला, his son and daughter. अब उन्होंने एक सेकंड प्लांट खोला सितारगंज नियर हल्द्वानी उत्तराखंड। तो बच्चों, जब आपका काम में पैशन होता है, when you love your work, when you support your team, when you support your customers, when you see their problems, observe their problems as your own problem and try to resolve it ASAP, तो growth is bound. इन 2007 पहला कब खुला था? 1996 के अंदर। देखिए इन 1996 second plant in Sitarganj near Haldwani in Uttarakhand. In 2007, Jhunjhunwala started a second plant in Sitarganj near Haldwani in Uttarakhand, which is near to the capital of the country, Delhi. Attracted by the hill state tax regime and its proximity, वो पॉइंट आई गया है, नियरनेस टू दिल्ली फैंसी मार्केट। तो बच्चों यहाँ पे प्रोडक्शन करके दिल्ली की फैंसी मार्केट में माल पहुंचाना इज इजी। सो ही specifically had chosen this place, which is Sitarganj in Haldwani in Uttarakhand. Now the plant capacity has just been doubled to 8,000 tons per annum at an investment of 22 crore. तो जब उन्होंने प्रॉफिट देखा इसमें, तो इन्होंने इस प्लांट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी उसको बढ़ा दिया टू 8,000 टन्स पर एनम। टीपीए का मतलब होता है टन्स पर एनम और पर ईयर। ला ओपाला, a silent performer, has reported sales of 157.66 crores and a profit after tax of 22.8 crores for the year ended March 2013, an increase of 34% in revenue from 117.5 crore sales with profit after tax to 12.6 crores in the previous year. तो बच्चों, इन्होंने 34% अपने रेवेन्यू में इंक्रीज कर लिया है। एंड देखिए, जो थर्ड पॉइंट है ये बताता है कि जो जब भी आप कोई प्रोडक्शन करते हो, आप प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल लगाते हो, लोगों की सैलरी लगाते हो, यू नो इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इनटू इट, पूरा प्रोडक्शन प्लांट चलाते हो, फिर आपको यू हैव टू टेक योर सेंड योर मटेरियल फॉर पैकेजिंग। आफ्टर पैकेजिंग you have to send it to other places, for example from Uttarakhand to Delhi or other places in the country. So everything requires money. तो जब आप सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, उसके बाद अगर आप हर 100 रुपए में से 34 रुपीज कमा रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग अ प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। तो मैं ये थर्ड पॉइंट एक बार दोबारा लेता हूँ इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई टू यू मोर। ला ओपाला अ साइलेंट परफॉर्मर, ये ज्यादा शोर नहीं, इनके एड्स भी कम आते, बट दे आर द मास्टर्स ऑफ देयर वर्क, has reported sales of 157.66 crores and a profit after tax of 22.8 crores for the year 2013, with an increase of 34% in revenue from 117.5 crores of sales with PAT of 2.6 crore the previous year. तो इनके पास 34% revenue ज्यादा है। Fourth point, La Opala is the only opal glassware manufacturer in India and holds 40% of the 400 crore estimated opal glassware market in the country and in competition with global brands. और कुछ global brands भी हैं जिनके साथ ये compete कर रहे हैं। तो they are holding 40% of the market share of 400 crore rupees market of La Opala or glassware market in the country. Let's move on to the next point. तो बच्चों मैंने मैप में आपको सितारगंज दिखाने की कोशिश की है। सितारगंज is here and it is near Haldwani, and if it's reduce it, उसका साइज छोटा करेंगे तो आपको पता चलेगा how closer it is to Delhi and its fancy markets.
So with this, we have come to the end of the bull in a china shop, the first case study of class 12, and we have covered these points. The idiom, the bull in a china shop, what does it stands for? Case study, we have studied why is bone ash used in bone china crockery. Fourth point is the porcelain and glass tableware market in India. Radha Glass at Madhopur, how they started, and it was just a humble beginning, and what they have created later in 1996 and 2007. Collaboration with Dusan of South Korea. It is about networking and persuasive skills of Sushil Jhunjhunwala. And second plant in Sitarganj near Haldwani in Uttarakhand. So, bacho, with these points, we can sum up, the first case study of Sushil Jhunjhunwala. And if you have any queries, any questions, any doubts, you may please ask me, or you can put the doubts in comments, and I'm going to, share the answers with you. Let's move on. And dear students, हर क्लास के अंदर I take 10 to 15 questions, और ये questions with hints है. मैं आपको इन क्वेश्चंस में आंसर्स नहीं लिख पाऊंगा, बट आई विल गिव यू हिंट्स. तो अगर आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज हिंट्स you can write down the proper answers. Let's take up the first question. In the 19th century, it was common to import crockery from China in return for dash exports from Kolkata. तो हम कोलकाता से क्या एक्सपोर्ट करते थे in order to import crockery from China? Obviously it was opium. तो मैंने opium यहाँ पे लिख दिया है. ये देखिए, opium I have written over here. Second point, however, bone china crockery never really caught on because it used rhino horn ash. बोन चाइना क्रॉकरी कभी भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंडिया में इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसने राइनो हॉर्न ऐश को यूज किया. तो इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? So obviously it is false. It is cow bones ash. Third point, Radha glass is present in Bijapur. Right or wrong? Wrong. It is in Madhop. The eldest son of the family was who? Sushil Jhunjhunwala. Sushil Jhunjhunwala got an idea in the late 1980s during a trip to which country? South Korea. Jhunjhunwala realized that nothing big had happened if he stuck to traditional glass products and was persuaded to look around. Right, right. This is the right option. La Opala is the only opal glassware manufacturer in the country and holds 40% of the 400 crore estimated opal glassware market in competition with a global brand. Whether right or wrong? Right. Eighth question. In Dash, Jhunjhunwala started a handmade lead crystal glassware unit in collaboration with Dusan of South Korea. In which year? 1996. How many skilled workers were there at Madhapur plant? 150. In Dash, Jhunjhunwala started a second plant in Sitarganj near Haldwani in Uttarakhand. Which year? 2007. So, bacho, I have given you questions. I have given you the whole case study. Now, you just have to go through it once, twice, or thrice, and you are going to, understand it completely. So, with this, we have come to the end of today's class. Stay strong, stay healthy, and take lots and lots of care of yourself. And until we meet next time with the next case study, bye-bye for now. God bless you. Keep commenting and keep helping other students to subscribe it. And always remember, at Mavericks India Solution, we are providing free education. We are not costing anything to anybody. You just have to look towards our classes, regularly attend the classes and see the benefits. So bye-bye for now. Take care. Meet you all in the next class. Thank you very much.